It is acceleration produced by Earth, जो हम पढ़ रहे हैं. Okay. Second scenario can be when the body is below the surface of the Earth. Surface of the Earth. So, which means a situation like this where this is your Earth, but the body which you are referring to is drilled inside and maybe at certain distance. Okay, so this is where it is. ये आ रहा है, but under a body. So below the surface of the Earth. Now to calculate the force being experienced by this particular object, which is inside the Earth, although the formula remains the same, F is equal to G, but mass of Earth will reduce now because it's a smaller Earth this object is experiencing. अंदर चला गया वो by some amount. So we will take a smaller radius. So let's say this radius was to the tune of, okay, so ये radius है इसका. Small r ले लेते हैं इसको. So the force experienced is G new mass m dash G m by r square, which is the smaller of the, this is r. Okay, and the mass will go down ratio proportion say. So if the mass is for 4 by 3 pi r cube rho, the mass is m. So the one it is m upon 4 by 3 pi r cube into rho. And for 4 by 3 pi r cube volume, is equal to m r cube upon r cube rho. This is the mass you have to take in the formula. G into mr cube by r cube rho upon r square. This is the new force. हाँ, और पाई ये तो कट गया ना 4/3 पाई रेशियो प्रोपोर्शन से. ठीक ठीक बड़े गोले का इतना मास, छोटे गोले का कितना मास. So this cancels, and force is therefore proportional to G m r by r cube. So force in the case of body below the surface of the Earth is proportional to how much uh, is the depth you have taken. तो ये radius r है, तो आप कितना अंदर गए basically, r minus r. This is the amount by which you went inside, and the new Earth which you experience is, so force is proportional to r. तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये तो fixed है on the surface. So if I have to draw a graph of say radius, r is equal to r, this is surface. On the surface it is fixed, and if you go below the surface, then force is proportional to r. So smaller is the r, smaller is the force, but the decrease is like this. Okay, so smaller is the radius, smaller is the radius you take, smaller is the force, and y is proportional to 1 by x rule. So x is sorry, y is proportional to x. So straight line बन जाएगी ना, sorry. It should be a straight line like this with a negative slope. If radius is 0, force will become 0. At the center of the Earth, no force experienced. So this is r versus r. The balance is now the third part, which is how does the gravity or the force of gravity behave when it is above. So G m e m by r square की जगह we will write r plus h whole square. Now the body is at height h above the Earth's surface, and the total is r plus h. Okay, so r plus h. So this is G m e m r square 1 plus h by r
-2 is equal to GMM R square 1 minus 2h by r. Okay, so your this formula GMM by सॉरी मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया ना नीचे सॉरी तो नीचे है ये सो दिस इज G1 - 2h by r. ये GMM by r square I have put it as gravity. ये mg ये कट गया so acceleration due to gravity, so weight on the right hand side mg is equal to GMM by r square. So this is your acceleration due to gravity at a height h. And so इसका जो ग्राफ है basically it is equal to f at a height h is given by the f at the surface times 1 minus 2h by r. So we have to now so we are going to increase r beyond r, we are going to increase it by h. So अब ये h r is r plus h on the right hand side of this point at a height क्या होता है? So you can see the graph is a negative slope and it has a if you put the gravity to be force to be 0. Okay, so what will happen? You will get 0 is equal to f at the surface, which was GMM by r square. ये surface वाला f था into 1 minus 2h by r. So 0 is equal to 1 minus 2h by r, and h is equal to 2h by r is equal to 1, and h is equal to r by 2. So if you go to a height which is uh, h by 2, which is half the radius. If this is r, this is 3r by 2. And this is coming from binomial theorem, by the way. This approximation which I've taken. ये वाली 1 minus h by r जो मैं 1 plus h by r sorry 1 plus था ना सॉरी प्लस है 1 plus 2. अच्छा नहीं ऊपर -2 बन गया था तो माइनस ही हो जाएगा. It is minus. Binomial theorem से approximately and assuming that all other terms which are ये h रेस by ऑफ r माइनस square. टू है ना. हाँ तो माइनस हो हाँ. जाएगा ना. Assuming h by r square h by r cube will be approximately equal to 0 because h is very small as compared to r. ठीक है. क्लियर है बात? हाँ जी. ये समझ में आ गया? ये f सरफेस है ये वाला पार्ट. हाँ हाँ. ठीक है. और ये वाला पार्ट कि इसको अगर नहीं भी ये तो बेसिकली सरफेस पे जो वेट है दैट इज अ फोर्स mg. So mm go away. So the acceleration due to gravity actually comes out to be gme upon radius. यही 9.8 आता है if you put the universal gravitational constant, mass of the Earth, and the radius of the Earth. If you put the values here, the acceleration due to comes out to be 9.8 on the surface of the Earth. Okay? So ये एक और हमने लिया कि let this be equal to 0, ये वाला केस. At what height g becomes 0? gh function of height or force becomes 0. तो 0 डाला, इसको 0 डाल दिया at height h. 0 is equal to this r by 2. So if you go above Earth and your height is half the radius, तो मतलब यहाँ पे अगर आपका रेडियस अर्थ का ये है और आप r by 2 और ऊपर चले जाओ तो रफली your force experienced by you is 0. ठीक है. One expression which is clear in your mind is that uh, g at depth, if you go inside, can be written as this expression जो हमने निकाला था ये वाला. This is for depth. G gravity will be dependent on the GMR
r by r cube. The same g at r is equal to r is equal to g m e radius of Earth square. And the same g at any height h is equal to g 1 minus 2h by r approximately. So on the surface of the Earth, answer is this 9.8. If you go down, it reduces. Okay. And if you go above, it again reduces. दोनों जगह पे रिड्यूस हो जाती है. ये सेंटर में, if you put r is equal to 0, which means right at the center of the Earth, then your gravity will become zero. Acceleration will be no acceleration will be experienced here. Similarly, if you go at r by 2 height, extra height above the radius, r by 2 height, again you will have the same. Any questions in your mind? नहीं. Clear है? हाँ जी. ठीक है. We will revisit the graph sooner, very soon. But ये वाला part तो समझ में आ गया ना. हम्म. घट रहा है और ये फिक्स्ड है वहां पे. ये 9.8 से करस्पॉन्डिंग mg है ये वाली फोर्स. ठीक. डेप्थ पे भी देख लिया, हाइट पे भी देख लिया, और वो भी देख लिया. ओके, ऑलराइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. Okay. So I will just open your assignment and paste that question actually. See what were the questions that came from your assignment. Okay. You can see your question number 1 was, I will just share it with you. This is your question number 1. ओ तेरी, गिरा, टूटा. कांच का था या शीशे का? क्या? ग्लास. शीशे का था. ये हाइट वाला केस लगाना है, so you can use the approximation. It should be reduced by 36%. So the new value is going to be 64% of G. हम्म. ये वाला. At this site, 0.8 times the radius of the Earth. ठीक है.
Okay, he's able to jump only 1.5 meters. Okay, हम्म so velocity becomes zero. V square minus U square is equal to 2AS. You have to find key when the gravity is the new gravity with less density. So हम्म gravity का formula, so we know, right, हाँ that force is equal to G mm by R square on हाँ the surface. हम्म And the force on some other planet will be G will remain same on that planet, but mass of that planet will be different. बॉडी तो वही रहेगी, उतनी मास की रहेगी बंदा जो है. और हम्म रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितना दिया है? 1/3, राइट? सो R/3 तो डाल ही सकते हैं. एंड द मास इज हाउ मच? 1/4. सो जी 1/4 mb/4 square into m. So the force experienced on Earth is this much, and the force experienced on the planet is this much. So force planet upon force Earth can be written as G m planet is mb/4. मतलब 9/16 कुछ आ जाएगा. नहीं, मेरे को ये लगता है GM² थोड़ा लेना था हमें. नहीं जी एम मतलब ई 9/4 शायद. हाँ, ये R² by 9 डिवाइडेड बाय GME m/R², राइट? हाँ जी. तो ये सब कट जाएंगे बाकी, और सिर्फ रह जाएगा 9/4. 9/4. तो द एट दैट प्लेनेट द ग्रेविटी इज 9/4 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. बहुत ज्यादा है ज्यादा काफी, है. काफी तो से ज्यादा है. भी ज्यादा है. तो इफ द रेडियस ग्रेविटी इज कम है. 9/4, अर्थ पे हो गई A at Earth is 9.8, and A on the planet is इज 9.8 times 9/4 meter per second square. Meter per second square. A Earth. Okay. So V square minus U square is equal to 2A Earth S Earth, and V square minus U square planet is equal to 2A planet into S planet. S planet निकालना है हमें. And assuming that both start with the same velocity on both the planets, final velocity is zero. So minus U square is equal to 2A Earth into S Earth. This will be 0 minus U square planet is equal to 2A planet into S क्या planet. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना. 9/4 क्या कहते हैं. Yeah. 9/4 इंटू ये 9.8. बराबर है. The initial velocity is same. हाँ So जी. 2AE S Earth is equal to 2A to 9/4 A Earth into S planet. So 2 कट गया, और AE भी कट गया. So S planet is equal to 4/9 of S Earth. So it will be 4/9 of 1.5 meters. So 6/9 is equal to more acceleration due to gravity means less distance. भारी बहुत हो जाएगा ना वो. Any doubts? नो. Good. समझ आ गया. एक हमने वो कर लिया था. Mass is broken into two parts of masses m1 m2. How हाँ वो are कल कर m1 लिया and था. m2 are related? Maxima, minima. हाँ जी. कर लिया था Yeah, हमने. सही है. Try this. So now the variable is radius. So you have to think how radius impacts gravity.
How would the value of acceleration due to gravity change? Yes. Would So G, so Mhm. force is given by G mm by r square. This is Okay, a force experienced by a mass m on the surface of the earth. ठीक है. ठीक है ना? हाँ जी. Now we have to calculate new force when the mass doesn't change of earth, but the radius shrinks. ठीक. Answer. Okay. 96%. ठीक. Changes by 4%. Any doubts? समझ नहीं आया तो नहीं, समझ आ गया. सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स, कुछ है हाँ, ही ये नहीं. असाइनमेंट ही है ना. पहले तो वो करवा देते हैं ना, जो सर ने आपके. सर नहीं, मैं तो मैडम है. मैडम. ओके. मैडम मैडम का सर. जो मैडम. गंदी सी. व्हाट? मैडम. ओके. बहुत इंग्लिश का वो झाड़ती है. मेरी तरह. नहीं नहीं, आपसे थोड़ी सी ज्यादा. व्हाट? मुझसे भी ज्यादा? सही. गुड. ये भी हमने करा डेरिवेशन. हमने नई जी निकाल ली थी. डेरिवेशन बिलो द अबव. जी डैश आया था हमारा. जी 1 - 2h/r, राइट? सो लॉस ऑफ वेट कितना आ जाएगा? लॉस ऑफ वेट. अच्छा. लॉस ऑफ वेट पूछा है क्या? यस सर, पूछा है. आ गया. प्रूव्ड. दिस इज द न्यू ग्रेविटी एट हाइट h. द लॉस विल बी ऑन द सरफेस. इतना वेट था. हाइट पे जाने से इतनी ग्रेविटी थी तो इतना वेट हो गया, तो लॉस ऑफ वेट. ये सरफेस पे है वेट. हम्म. दिस ग्रेविटी इज ऑन द सरफेस. ओके. 2 mgh/12 यानी कि mgh/6 हो गया. अच्छा सॉरी, m2 mgh/r. ये मुझे 12 लग रहा था अभी ये. ओके. आपका आर बड़ा अजीब सा बना हुआ था. ठीक है. All right. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे. If you look into this formula, you have a clear understanding that force, which is gmm by r square,
can also be written as mg, the weight of the mass m. That is a force experienced by a mass m is this, and the force experienced by a mass can also be written like this. So gravity is actually gm by r square. So gravity is proportional to mass and is proportional to radius of the planet. So it's a planet driven thing. It comes, like you said, it comes from the mass and radius. हाँ So this is the variable. If you play with the variable, this is the question. So double, planet. create a planet whose mass is double and radius is double and find its new g. Then the time period is given by 2 pi under root L by g. सही है. पेंडुलम का एल होता है, ये जिस प्लेनेट पे पेंडुलम है उसकी जी लेनी होती है इस फॉर्मूले में. पुट इट टी प्लेनेट एंड टी अर्थ को कंपेयर कर लो एंड देन से व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन दिस प्लेनेट. करो, राइट. ये समझ में आ रहा है ना व्हाट इज द मैसेज हियर, हाउ द वेरिएबल्स आर impacting gravity. हम्म. They are directly proportional. Gravity is directly proportional to mass of a planet and inversely proportional to radius square of a planet. Yeah, ठीक है. What will be the time period? ठीक है, 2 pi upon. Uh, मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं. नहीं नहीं, वो आवाज आ रही थी, आ रही होगी. यस. ठीक है, इसके अंदर जो प्लैनेट का है, ओके. twice the mass of the earth. ये 2 पाई इंटू है ना, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई हम्म. जी. हम्म. ठीक. 2 पाई. दिस विल बी जी डैश. ओके. हाँ जी, जी जी डैश. 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 जी. ठीक है.
into under root L by G. आगे T dash. T dash आगे मतलब एक तरह से अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा So the time period will become root 2 times, रूट 2 टाइम्स. Yes. which is on the earth. Root 2 times of that. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. So this topic is over. The topic of acceleration due to gravity. असाइनमेंट से थे ना सारे क्वेश्चन. हम्म, बस ठीक है. नहीं सारे कर लिए हमने. All. हाँ. Okay. So one more. I'm going to the next page now. Okay. So let's talk about what are the other factors on which the acceleration due to gravity depends. Okay. अभी तक सारे cases में we took Earth to be a perfect sphere, but that is not the case. Actually, it's a जियोड. yeah. The exact shape is more elliptical shape than a जियोड कहते हैं. spheroid. How do you spell it? जी Okay. ई आई ओ डी. This is your Earth. जियोड मतलब जी ई ओ आई डी. Okay. So you can see the radius here is less on the semi-minor axis, whereas the radius here is very high. Minor axis and major axis. So you can see the radius at the poles and radius at the equator. There are two radius Earth has. So you can see gravity is function of radius. So if you see that radius of equator is greater than radius at the pole, then gravity at equator is less than the gravity at poles. And that is why if you buy jewelry on the poles, if you buy jewelry here, for example, and then you come and weigh it here, what will happen? कम Way आएगा. less. Yeah. Weight, mass तो सेम ही होगा जो होगा, but weight कम आएगा. वेट कम आएगा. So you have minimum gravity at equator. So at equator, gravity is minimum. इक्वेटर. You will feel heavy at poles. If you go to poles, हाँ. you will feel much heavy. काफी weight बड़ा महसूस होगा. Okay. Now, second, what does the latitude depend on? Another factor latitude depends on is इसको circular shape ही मान के चलते हैं उसमें. मतलब अगर अंटार्कटिका में जाए तो वहां पर हमारा वेट ज्यादा है. Weight ज़्यादा आएगा. We will हाँ. feel more attraction. Yes, that is what it means. Okay. So let's see this scenario. Because of rotation of Earth, now Earth is rotating about its axis. Okay, now that axis is this. अभी हमने टेढ़ा नहीं बनाया, straight बना दिया 90 degree. And say the body is located somewhere here, and its angle with respect to the center is a lambda. Okay, and you can see if you body was here, lambda will be 0. If the body is here, then the lambda is and this is an equatorial plane.
This is your equatorial plane. So body can be either here, here. So we are taking a position which is somewhere in the middle, either lambda. So lambda is the angle projected, and this is the latitude of the place. Latitude. So the question is, how does latitude impact the acceleration due to gravity? That is a question being asked. Since the Earth is rotating, so this particular body will be also rotating here, like in a smaller circle. ये इसमें rotate कर रहा होगा. And what will it will experience is a centripetal force mr omega square. In fact, centrifugal force, क्योंकि pseudo force होती है वो, it will experience this because it's on an accelerating frame, and that accelerating frame is going to pull it inwards. So the pseudo force will be outwards. So एक force लग रही है उसके ऊपर. Now take the components of this force. Okay, and then of course one is the normal reaction वगैरह, ये इसका mg हो गया, with the force with which it pull pushes the earth because of its weight, and earth in return pushes it back, mr omega square cos delta away from the center centrifugally. और ये वाली जो इसके ऊपर है, this is mr square, mr omega square, sorry, mr omega square sin lambda, एंड दिस इज द, क्योंकि सर्कल ये वाला है बाय द वे, जिस सर्कल में घूम रहा है, सो द एक्चुअल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट फेसेस इज दिस outward it, okay, like this. And if you take two components of that centrifugal force directed towards A, because the circle is this, okay, chota circle, this is the chota circle, its position is determined by the latitude, this. So one equation you get is mg is equal to mr omega square cos delta. This is one stuff you get uh, by virtue of, sorry, so the net force it experiences. Okay, so the net force it experiences is mg lambda is equal to mg minus the outward force mr omega square cos lambda. Lambda is the latitude. Latitude. So latitude at equator is 0. Latitude at poles is 90 degree. This is latitude at equator 0. So mg lambda, the net force it experiences on the surface here. Okay, mg lambda is equal to mg minus mr omega square. So you can see for yourself that m तो सब में से चला गया. So g lambda is equal to g minus r omega square cos of lambda, and g इकट्ठा कर लें अगर हम, if you collect g, what will happen? So this is new g, okay, the net g, g dash due to lambda. So g dash lambda is equal to g minus r omega square cos lambda. So cos lambda varies, fluctuates between 90 and 0. It's a first quadrant. So cos lambda is fluctuating between 1 and 0. And therefore g dash will be, ये हमने क्या लिखा है यार, एक सेकेंड, ये जी लैम्डा लिख लेते या जी डैश लिख लेते, जी इंटू लैम्डा थोड़ी ना, ये एम जी डैश था, तो ये लैम्डा इज नॉट रिक्वायर्ड. वी हैव यूज्ड द टर्मिनोलॉजी ऑफ net force experienced by this body in this direction towards the center of the earth. Earth is pulling it with mg and giving it a normal reaction of mr omega square cos delta. ठीक है जी. और so इसके ऊपर जो g dash due to so the dependence of weight on lambda is given by this relationship, g minus r omega square cos lambda. So r भी पता चल जाएगा depending on the position r. This is also known to you. Okay.
So can you make out that if lambda increases, if angle increases, what will happen to G? If lambda increases, what happens? Cos lambda decreases. हाँ So जी. G minus a smaller quantity. So G lambda increases. So at a smaller latitude, G is, if sorry, if lambda increases. So if lambda is higher, G lambda goes up, increases. If lambda decreases, then what happens to G lambda? If lambda decreases, then lambda also decreases, which means at lower latitudes, G lambda will be lower, which is true. Lower latitude means equator, right? The lowest latitude possible. Equator. तो ये relationship भी निकाल लिया हमने. How does gravity vary with lambda? It actually varies with cos of lambda. And if you want to get rid of this thing, you know this is R. This line is R. This is R, your position. So you can find a relationship between this R and this R also. Okay, so this is R. So cos lambda is equal to how much? R by R. R is equal to R cos lambda. ये R और cos lambda. So G minus R omega square. G lambda. Another way to write this. Omega, the revolutions taken by Earth is fixed. One revolution takes you 24 hours. So omega is 2 pi by T. T is 24 hours. ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने R को. R is equal to R cos अल्फा. तो एक cos अल्फा और आ गया ना, तो स्क्वायर बन गया. ठीक है. Using this. So small r की वैल्यू डाल दी नीचे. स्मॉल r इज कैपिटल R इंटू कॉस लैम्डा. उसको यहाँ डाला तो वो नीचे अगली लाइन में G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. सो G lambda in term purely in terms of Earth's parameters, acceleration at the surface minus R omega square cos square lambda. ठीक. All right. So graph, let's draw the graph which was pending. ठीक है? Let's draw the graph. एक तो हमारा डायरेक्टली आ गया था. As the radius increases, the force increases. And then it reaches the highest point at the surface, and then it will reduce. Force is equal to Gmm by R plus H square, which is at a height R is equal to R plus H. मतलब एक height पे. तो it is actually F is मैंने तो 1 by R square 1 minus 2H by R कर दिया था इसका, if you remember, binomial लगा के. But really speaking, it is 1 upon R square. So this particular part of the graph, okay, this particular part of the graph represents the R less than R at depth. How does the behavior happen? F is proportional to R, and on the right hand side, F is proportional to 1 by R square. Total distance ले लिया center से. इसको total को R मान लिया. R plus H is equal to R. So it's square, and here it is the highest. So both on the depth side and the height side, the acceleration due to gravity goes down. On the depth side, it is directly proportional. It increases as the depth increases.
as the r increases, which is the smaller radius of the Earth actually, not the depth, but the and on the if you take it upwards, then the distance from the center. So all these distances of r, when I say r, are being measured from the center of the Earth. So this is at the surface of the Earth, then it is at the height h. So measurement यहीं से हो रही है. Here r is equal to r. वो ये point है. And here r is this, and here r is r plus h. But the distance is being measured from center. So this is the graph. अब ये स्कूल में आपके पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं. Draw the graph of acceleration due to gravity at surface of the Earth, etc., etc. 3 parts. Let me just copy that. So the question will be plot a graph. Acha, this is gravitational force between any two bodies, inversely proportional to 1 by r square. मैं वो वाला ग्राफ देख रहा था जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है. अच्छा, वो नहीं पूछा हुआ है इसमें. कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ जो पूछा हुआ है? प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन f and 1 by d square. D square is a distance, so radius is the distance, and f are how are they related to each other. ठीक है. क्या होगा ग्राफ? जनरल, इट इज नथिंग टू डू विद एक्सेलरेशन, नॉर्मल, ये पढ़ चुके हैं. f is equal to g mm by r square. हम्म. Here r is the distance between them, right? D. So f versus d graph. ओके. As the distance will increase, the force will go down drastically. एक तरह का क्या कहते हैं इसको? Inversely proportional to square. हम्म. Y is equal to 1 by x square graph. ओहो, नीचे चला जाता है यार. Tends to सॉर्ट ऑफ zero at टाइप ऑफ infinity. हाइपरबोला लग रहा है. हाँ, कह सकते हैं वो 1 by x कर लिया हमने. हम्म. This is x square. 1 by x square. आ गया समझ में ये भी? और क्या पूछा हुआ है देखें जरा. असाइनमेंट खत्म हो जाएगी आज तो ऐसा लग रहा. नहीं नहीं, because some questions are topics we have not covered theoretically, the topics, so नहीं हो पाएगी. मतलब इंटेंसिटी नहीं ऑलमोस्ट की. आधी से ज्यादा तो हो ही गई होगी. हाँ, 3-4 टॉपिक बचे हैं. ओके. ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं, ज्यादा टॉपिक बचे हुए हैं, हो जाएगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये. सिंपल टॉपिक्स एक्चुअली. जस्ट गिव मी 1 second.
Hanji, sorry. Okay. So we have done all the factors. We have done the angular velocities, stuff like that. Hmm. Let's do intensity of gravitational field. Okay. Intensity of gravitation. Yes. कुछ नहीं होता. There's nothing but the force per unit mass. So if you have a intensity of a gravitational field, intensity of a gravitational field. Okay. So if you have a, for example, you have a bigger mass and you have a smaller mass here. Now, there is a field around this bigger mass. Okay? जैसे सन के चारों तरफ फील्ड है और उस फील्ड की वजह से सारे प्लैनेट्स उसके इन्फ्लुएंस में है. इट्स एन इमेजिनरी place where field justified by physics, where the masses experience some forces. So the force experienced per unit mass at a particular distance is called intensity at that point. Because the force which is experienced by any mass, for example, the mass of the bigger is m, the smaller is m, and the distance between them is d squared. This is Newton's law of gravitation. Now, if I were to calculate the intensity at a distance d due to the bigger mass, then the intensity will be F by m is equal to gm by d square. So this is the force experienced by 1 kilogram of mass at a distance d. So whatever is the force experienced by 1 kilogram of mass at a distance d is known as the intensity of the gravitational field and is denoted by E. Okay. The only difference is normally you use the word Newtons here, Newton, but now you Hmm. will use Newton per kilogram. How much is the, we are interested in knowing the power of this. So if there is another mass, slightly smaller than this bigger mass, and we are calculating its power or intensity at a same distance d. Same distance. Got it? Hmm. How do you compare the two gravitational fields? The only way to do this is say, okay, the distance is same. Let's calculate intensity here due to first mass. Let's calculate intensity at the same distance at the second. It'll Okay. give you a fair idea, per kilogram basis, which field is stronger. So whenever you do force experienced by a mass on per kilogram basis, the new physical quantity which is coming up is called as intensity. See. Okay. Now show that now if you notice, for example, had it been Earth, and you would write the force experienced by a body is given by g/mm by r square. For example, the body is lying on the surface of the Earth, and this is the center of the Earth. This is the distance r. Mass of the Earth is this. So let's say what is the intensity of Earth's gravitational field on its surface, which means at a distance r is equal to d. So d is equal to r. अगर ये d use करना है तो. So now the force which is experienced by the mass is given by g/mm by r square, and per kg basis वो 10 किलो का था मान लो. So F by m is equal to gm by r square. So what is this? ये g नहीं आ गया acceleration due to gravity. mg होता है ना वो भी. mg is equal to gmm by r square. तो Okay. g की वैल्यू आ जाती है gm by r square, वही आ गया ना. So the intensity of the gravitational field is actually same as the free acceleration of a test mass of 1 kilogram. Okay. The intensity of a gravitational field is the force per unit mass basis at a distance d, and numerically it is equal to the acceleration experienced by the 1 kilogram force, 1 kilogram mass. So जो mass
एक्सेलरेशन फेस करेगा एट अ डिस्टेंस डी, सो ये वाला मास की कोई एक्सेलरेशन होगी। Numerically, that will be how much? Let me just redo this. I think you're not able to understand this point. So the universal Newton's law of gravitation. Okay, so this is a mass lying on it. What is the force between these two, as per Newton? GM GMM by R square. ठीक है? हाँ. Okay. Now, what is the weight of this mass, small mass, in terms of acceleration due to gravity? mg, ma. हम्म. Force is also written as ma. ठीक है? ठीक A है. is the acceleration due to gravity on the surface of Earth. G लिख दिया. ma. So while it is appearing to be stationary, it is actually still experiencing a G. That force which it is experiencing is also written like this. ये भी अर्थ की वजह से ही है weight. Who is Okay. providing G otherwise? Who is providing G to this mass? Earth. हम्म. Coming from Earth, right? ये तो अर्थ की प्रॉपर्टी है ना. अर्थ इसको फोर्स प्रोवाइड कर रही है. ये वाली फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इस मास को? म्यूचुअल है. वैसे ही वेट भी म्यूचुअल होता है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो जाता है वापस फिर. Who is providing this force to this mass? The center. The Earth. The Earth. So the force which is calculated from Newton's law of gravitation and Newton's second law is one and the same thing. देखने का तरीका है, आप उसको यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखना चाहते हो या न्यूटन सेकंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, कैसे ही देख लो. सो न्यूटन सेकंड लॉ mg बोलता है फोर्स. उसी फोर्स को न्यूटन ग्रेविटेशन में क्या बोलता है? आया समझ में या नहीं आया? नहीं समझ आ गया, समझ अब आ गया होगा समझ में. हम्म. So if I write force is equal to G mm by r square and I want to write F by m, this is per unit mass, right? Force per unit mass. इसको intensity भी तो बोलते हैं. Intensity of the gravitational field is the force experienced by 1 kilogram of test mass at that point. तो मैंने r distance पे 1 kilogram रख दिया. And the force experienced per kilogram basis is this much. And see what is the acceleration due to gravity. Aren't they same? So a planet's acceleration due to gravity, which is experienced by 1 kilogram. ये भी तो 1 kilogram लिख दूं, अगर मैं 1 into g कर दूं तो g है ना. 1 kilogram के ऊपर. And the intensity numerical are same. Whatever is the value of, so जो हम बोलते हैं 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो acceleration due to Earth on the surface है, that actually is same as 9.8 Newton per kilogram of force being experienced by 1 kilogram mass. ओके. इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 9.8 into 1 kilogram divided by 1 kilogram. ये MA है ना, MA. हाँ जी. MA को मैंने लिख लिया, A into M, और नीचे पर किलोग्राम तक काट दिया, तो A आ गया ना, 9.8 is equal to 9.8. ओके. So numerically they are equal. Either I can write it as 9.8 meter per second square. Some people prefer to write it as 9.8 Newton per kilogram. This will be called as the
intensity of the gravitational field of the Earth, this will be called as the acceleration due to gravity provided by Earth. One and the same thing. एक जो है प्योरली इस फॉर्मूले से निकल के आ रही है 9.8, और ये वाली जो है इस फॉर्मूले से आ रही है। अगर दोनों ही GM/R करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना दोनों का। दिस इज अर्थ मास, दिस इज अर्थ रेडियस, इस इधर भी ये सेम ही तो है। ठीक है। न्यूमेरिकली इफ यू पुट द वैल्यूज दोनों का 9.8 आएगा ना। यस और नो? यस आई एम यस यस आस्किंग योर क्वेश्चन। ये GM और R की वैल्यू यहाँ डालो या यहाँ डालो, वैल्यू तो सेम ही आएगी। यस यस। इसको लिखेंगे 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, इसको लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द ठीक। स्टेटमेंट इज द gravitational field intensity at any point, ये तो सरफेस पे थी, but any point is numerically equal to the free acceleration of a test mass at that point. Free fall वाली acceleration के बराबर ही होती है at that point. The intensity of the gravitational field is numerically equal to the acceleration experienced by a test mass in free fall. Even if the body is lying on Earth, it is not moving, it is experiencing 9.8 meter per second square. Anything that comes to your mind? Intensity of gravitational field per kilogram basis पे measurement किसी भी फील्ड की। फील्ड का वैसे तो फोर्स के ऊपर एम्फोसिस है अभी तो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्मॉलर एंड अ बिगर मास, देन वी गेट क्यूरियस अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द लार्जर मासेस। उसमें क्यूरियोसिटी हमारी होती है। तो उनका कोई हमें बेंचमार्क बनाना था कि हाउ डू वी मेजर देम। देन वी से ओके, ये बॉडी है और ये बॉडी है, दोनों को एक एक किलो दे दो 2-2 मीटर पे, तो देखो इनकी हाउ मच फोर्सेस इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय 1 किलोग्राम। So that force experienced by 1 kilogram will give you a fair comparison of the power of these two masses, bigger masses. एक की इंटेंसिटी आ गई 5 न्यूटन पर किलोग्राम, एक की इंटेंसिटी उस उतने ही डिस्टेंस पे आ गई 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो 10 न्यूटन वाला काफी वो है ना, सॉलिड, पावरफुल। It can apply 10 newtons for every kilogram at 2 meters. The other one can only apply 5 newtons on 1 kilogram at the same distance. ठीक है। न्यूमेरिकल्स करें थोड़े से? ठीक है। Okay. Okay. NCERT exemplar.
gravitation. I hope it opens 12, 11th standard. क्या क्वेश्चन पूछे? इंट्राप्लानेटरी। look केपलर। at hmm, ग्रेविटेशन। सर वैसे इस चैप्टर को पढ़ने का से यूज क्या है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में क्या क्या काउंट होगा? So let me tell you an example. There is a doctor who doesn't understand what is gravity. Okay, and the patient is lying on the floor, and the protocol is कि blood जो है वो brain की तरफ जाने की जगह सारा legs में आ गया. Okay, and the patient is fainting because of that and may lose his memory. And therefore it is important कि immediately leg raise से blood को वापस brain की ओर भेजा जाए. तो वो gravity से ही जाएगा. There is no other way. And there are lakhs of application of every physics topic we have done. Unfortunately हमें दिखाते नहीं है वो. But you name it, name the area of life where gravity will be used. Every area. हाँ। Yes. There is tremendous use. We don't know the engineering and medical usage, right? हम्म। वो बात अलग है क्योंकि वो हमारी पढ़ाई के अंदर वो है ही नहीं. नहीं मतलब ऐसी जनरल यूजेस जैसे कि जो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो हमने पढ़ा, हम्म. रिजिड बॉडी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उनका भी कोई यूज बहुत है है? यार, बहुत यूज होता है. बहुत अच्छा। यूज होता है. जो बिल्डिंग की डिजाइन होती है पूरी की पूरी, उसमें टॉक ऑन द बिल्डिंग को बहुत ध्यान रखा जाता है कि अपने ही वेट से कि बिल्डिंग टॉपल तो नहीं कर जाएगी. तो यू हैव टू पुट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द राइट प्लेस. नहीं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अगर बाहर चली गई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से, उसके बेस से, बिल्डिंग बिल्डिंग के बेस से ही अगर मासेस आपने ऐसे फिट कर दिए कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेशन टेल्स यू दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर आउटसाइड द बेस ऑफ अ बिल्डिंग, द बिल्डिंग विल टॉपल. टॉक लगने लग जाएगा बिल्डिंग के ऊपर ऐसे. सो ओ। द सेंटर ऑफ मास हैज टू बी विद इन द बेस ऑफ द बिल्डिंग. और जीरो नहीं चाहिए ताकि। हाँ, तो मतलब यूज होता है, ऐसी बात नहीं है. एक पेड़ भी तभी बेंड होता है जब गिरने गिरेगा, जब टॉर्क लगेगा उसके ऊपर. पूरा योगा इज बेस्ड ऑन टॉर्क. बिकॉज when you turn your body here and there, in fact you apply the pressure from leg or a hand of a teacher, वो जनरली आपको रोटेट ही करता है प्रेशर. ध्यान से देखना. आपको ऐसे धक्का देंगे, आप यूं घूम जाओगे, या आपकी टांग वहां नहीं पहुंच रही होगी, पहुंच जाएगी. वो टॉर्क लगा रहा होता है टीचर. That is unfortunate that we are not shown any of that as part of the. पर वो बीएससी फिजिक्स में होगा. अभी तो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर कोर्सेज. तो बेस बना देते हैं थोड़ा सा फ्यूचर कोर्सेज के लिए. दैट्स ऑल. फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आर गिवन टू यू. इंजीनियरिंग इज नॉट टोल्ड टू यू. बट डेफिनेटली दैट मच कि वो आप इंजीनियरिंग में जाओ, यू डोंट अपीयर ब्लैंक कि ओहो वी डोंट नो व्हाट इज अ फोटॉन, वी डोंट नो व्हाट इज व्हाट. सो मतलब वो नहीं होना चाहिए. पता होगा कि ठीक है जी, सामने वाला टॉक लिख रहा है तो टॉक पता है क्या होता है. इंजीनियरिंग में टॉक होता है. सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको ये नहीं पता न्यूटन ने फर्स्ट लॉ क्या था? हाँ, तो यू आर इन डीप ट्रबल. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू. दिस वाज चैप्टर 8, राइट? नहीं, चैप्टर 7। 7. ओके. हाउ. फिजिकल फर्स्ट वर्ल्ड चैप्टर. रिलेटेड है।
क्या यार, हमने सारे क्वेश्चन इसके भी कर लिए क्या? Try this. I'm going to the next page. लो जी। ठीक। हम्म, GH would be 25%. yes. 0.25 into G. 1/4 of G. Equal to G Hmm. 1 minus 2H by R. G से G कट गया, Hmm. ये 1/4 Hmm. 1 minus 2H by R. 3/4 सही है। R is equals to 2H. How did capital R become small r suddenly? I'm Okay. ये आ जाएगी, आंसर क्या है? मतलब 3 into 640 2400 kilometers. इनका क्या आ रहा है? Hey, 64. हाँ, 25% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, करा तो ठीक है 25%। हाँ, गलत होगा आंसर। क्वाइट लाइकली। हम्म, वेरी ऐसा मच। पॉसिबल ही नहीं कि सेम ही रहे 25% पे। नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, अग्रीड। गलत है, डजंट मेक सेंस। तो हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना फिर।
यस। ये 2400 किलोमीटर मुझे बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक 1 - 2h। नहीं, सही करा यार, 1/4, 3/4, 2h, 3/8 सही है। नथिंग रॉन्ग। आई थिंक इट्स ठीक है। 25% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस, G/4 सही लिया। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो। इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे कल। और परसों करेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो परसों दिस चैप्टर विल बी ओवर। रॉकेट्स वाली। हाँ जी। तो escape velocity and orbital velocity, I'm not clubbing them with the potential and gravitational potential energy. These two are two different types of topics which we will club. Potential and potential energy, ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। आएगा तो सभी टॉपिक्स में, बट इन दोनों को क्लब करेंगे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स on which it depends, and the numericals and the formulas we are done with. ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है रोटेशनल से तो। बहुत, काफी इजी है, बहुत 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 कंफर्टेबल है। वो थोड़ा सा टफ है, लंबा है तो बहुत। सर दिमाग ही घूम गया था कहाँ जाके। लेंदी। चलो, सी यू टुमारो देन with and let's do gravitation